CMA is easy to do because it takes less time. It takes less cost also in comparison to others. Who all are eligible for CMA? एग्जाम लेने के लिए वर्चुअली 12वीं पास कर लिया तो you are welcome to join in the journey. That's the truth. You know what one can expect in term of pay scale once they are done with CMA. 8 lakhs plus. Why do people pursue CMA after BCom? Whether you are a recent graduate or someone looking to elevate your career in finance and accounting, the US CMA offers a wealth of opportunities and advantages. In this episode, we'll explore what the US CMA is, why it is a great option after your BCom, the benefits of obtaining this certification, and the steps you need to take to achieve it. So let's get started. Welcome viewers, you are watching Edumont Mythbuster Podcast Season 6. I'm your host Mohit, and along with me is Rohan sir, our Chief CPA CMA mentor at Edumont, and we are breaking myths on US CMA after BCom. So welcome Rohan, welcome to today's podcast. Hey, that's a great topic. Thank you so much. Yeah. CMA after BCom, huh? Yeah. Chalo. So What are your questions? Let's start with that. Yeah. So Rohan, the number one question which we have is, why do people pursue CMA after BCom? Okay, that's straight into the meat of the pie. Right. सीधा ही आप ये पूछ रहे हो कि क्यों करते हैं लोग. Yeah. Okay, I'll tell you. क्या है ना, once you're a graduate in commerce, you don't really have a lot of opportunities unless you upskill. Okay, so after you're completing your graduation, or if you've completed your graduation, then you can start an entry level job. And I'll tell you something. I'm from DU. So I think I've disclosed this before as well, but even despite being from DU, the first package even I got was for 3 to 4 lakhs. इसी के बीच में होता है. As a graduate, that's what you used to get way back when I was a graduate, and even today. So हो गए 10 साल इस बात को भी उससे ज़्यादा हो गए. But that's the truth of it. के this is your starting salary, and then from there you can, if you keep working for 4 or 5 years, you can sort of grow your package. But there's a limit to how much it will grow. So क्या होता है कि you need to upskill. So why do people do CMA after the BCom? Simple answer is CMA is easy to do because it takes less time. It takes less cost also in comparison to other qualifications of this note, of this level, of this caliber. And it gets you the pay scale hike that you're actually looking for, that you're after, without putting in too much time in the process. इसलिए लोग इसको elect करते हैं. That is what it is. That's the truth of it. And again, this is only going to work for a specific type of individuals. So CMA is for people who are interested in building a career in financial accounting, financial planning, valuations, or forecasting or budgeting or FP&A. If that's your domain, if that's the thing that you're interested in, then CMA is the right choice for you in the short run. Great. So the next question will be, who all are eligible for CMA? That's another good question. Who all are eligible? Virtually anybody who's done their class 12th is eligible for CMA. But the thing is, Mohit, ultimately you do need to present that you have completed your graduation, which can be in any stream. किसी भी stream में चलेगी. मतलब वो graduation commerce की हो या engineering करी आपने, वो फर्क नहीं पड़ता उससे. It should be a valid graduation, and you have to submit it in a period of 7 years from the date of clearing both your last, basically जो भी CMA के एग्जाम में, 2 एग्जाम होते हैं CMA में, जो भी लास्ट एग्जाम दिया उस दिन से you have a period of, उसके passing days से you have a period of 7 years, 7 साल to give your graduation marks, graduation certificates. That's the idea. तो वो submit करने पड़ते हैं अगर आपको ultimately CMA की membership चाहिए तो. But एग्जाम लेने के लिए वर्चुअली 12वीं पास कर लिया तो you are welcome to join in the journey. That's the truth of it. So if you pursue, you are eligible, then what one can expect in term of pay scale once they are done with CMA. That's a good question. And this actually brings me to another sub point I should have pointed out earlier. मैं चलो बात कर लेता हूँ इस बारे में कि पे स्केल जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहली चीज़ तो ये कि if you're qualified तो you're qualified. That's what it is. So pay scales are generally more or less going to be similar to other qualified individuals in their domains, right? But with that being said, 2 चीज़ें. अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप फ्रेशर हो. और CMA की अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो आपको ग्रेजुएशन तो सबमिट करनी है, साथ ही साथ 7 साल के अंदर आपको ऑल्सो 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी सबमिट करना है. तो अगर आपके पास वो 1 year नहीं है वर्क एक्सपीरियंस का, एंड यू आर एन एब्सोल्यूट फ्रेशर, देन योर पे स्केल इज
So let me answer it this way. Then your pay scale is around 6 to 7 lakhs. That's what you would roughly be able to get As a fresher. as a fresher. And if you are somebody who's got at least 1 year of work experience, and you are or maybe you're somebody who's got just 1 year of work experience, and you finally do get your CMA designation, तो once you do actually have your CMA designation, सिर्फ 2 पेपर नहीं पार किए, बल्कि हमने मेंबरशिप भी ले ली इंस्टीट्यूट में, यानी कि नॉट us but the Institute of Management Accountants, IMA, not Edumont as an institute but IMA में admission, या हमने IMA membership ले लिया, is the point. तो जब वो ले लेते हो आप, तो then you are a qualified, full on qualified CMA, at which point your pay scale is 8 lakhs plus. Okay. Now if you're somebody who's experienced, you're already got 7-8 years of experience, and you're already at 10-12 lakhs in your career, so what you're now expecting is not कि starter का pay package क्या है, क्योंकि वो थोड़ी होगा अब. ऑलरेडी 12 कमा रहे हो तो फिर 7 पे थोड़ी जाओगे. कंपनी भी ये नहीं कह रही आपसे, कंपनी कह रही है आपने जो पढ़ा उसके ऊपर से और वैल्यूएबल होना चाहिए ना, इट शुड बी वैल्यू एड. सो विद योर एक्सपीरियंस द पैकेज विल ओनली इंक्रीज. सो फॉर समबडी हु हैज गॉट 4-5 years of experience making 10-12 lakhs, well after your CMA you're very much in the range of, if you're at 12 you're looking to get to 15. So you can ask for such an increment. That is the idea. Correct. And again the increment you will get itself will be worth more than what you put in, because cost in terms of time and money for CMA is low. But again your question was about pay scales, so right. I'm answering this well कि पे स्केल जो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे. पहली चीज़ तो आपके पास जो डिग्री है वो क्या है. दूसरी चीज़, अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप कितने क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस आपने नहीं कितने क्वालिफाइड हो. अगर आपने सिर्फ पेपर दिए हुए, आपने मेंबरशिप भी नहीं ली है, तो वो लोअर पे स्केल रहता है. अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको फुल पे स्केल मिलता है, क्वालिफाइड वाला. फुल पे स्केल पे फिर बात आती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है. ये बात है, ऐसे चलता है पे स्केल. ओके. सो when स्पेशली जब जहाँ पे भी किसी क्वालिफिकेशन के साथ यूएस आ जाता है रोहन, हर एक का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, कैन वी गेट अ जॉब इन अब्रॉड स्ट्रेट आफ्टर सीएमए. दिस इज वेरी कॉमन. जहाँ पे भी यूएस लग जाएगा ना साथ में. हाँ, एक्चुअली इज वेरी कॉमन, राइट, कि यूएस की डिग्री है तो यूएस हम जा सकते हैं. कैन आई गिव द ऑनेस्ट एंड ब्लंट आंसर? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज, अगर आप यूएस सीएमए कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार इसके बाद सीधा मैं यूएस चला जाऊंगा, तो दैट्स प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू हैपन. आई वांट टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर और समथिंग, राइट, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. But if you're somebody who has experience, you've got 7, 8, 10 years of experience, you are more likely after your CMA to get work with people who are in a position to put you to that track कि आप बाहर जा सको. For example, you're going to be working with bigger companies, multinational companies who have branches in the US, who need people who are qualified in the US. तो उस केस में बहुत बढ़िया यार, आप फिर माइग्रेट कर पाओगे इंटरनल ट्रांसफर से. बट इफ यू आर लुकिंग टू डायरेक्ट अप्लाई, आई थिंक मिनिमम 2 to 3 years का ये वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में हो, फिर यूएई में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो एज अ सीएमए एंड यू विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट. यूएई में 2-3 years का अगेन वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप क्योंकि इंटरनेशनल लेबर मार्केट में एंटर कर गए हो, तो आप यूएस, कनाडा, यूके इन जगहों में जॉब्स अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट अप्लाई, और आपको रिजल्ट आने लगेंगे. बट अगर इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई करोगे यूएस में, यूके में, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिग्रीज रेलेवेंट तो हैं, वहाँ की डिग्रीज हैं, वो तो खास वैल्यू देते हैं इनको, अग्रीड. बट it's not that easy to just walk out of India and get into a plane and then reach US. It's not that simple. You need to have something. You need to have something special as well, which is usually work experience, which is what the thing that counts. So certification plus experience, and then direct apply in UAE, get some experience there, and then direct apply to US, UK, Canada, Australia, whatever it is you're planning for. Okay. तो बेसिकली द फर्स्ट एक्सपीरियंस यू विल बी गेटिंग इन इंडिया इटसेल्फ. पहले तो इंडिया में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, लेना पड़ेगा. ये भी अगर हम जरूरी नहीं लेना पड़ेगा. देखो, इफ यू आर जस्ट लुकिंग टू गेट एन एंट्री लेवल जॉब अब्रॉड, तो डायरेक्ट अप्लाई आप यूएई में करोगे शायद एज अ फ्रेशर, तो भी आपको इंटरव्यू कॉल्स आने लग जाएंगे. बट फिर वो वर्थ इट नहीं होता ना. उस समय आदमी ये सोचता रहता है कि माइग्रेशन करूँ ना करूँ, इस बजट में मेरा घर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वहाँ पे रहने का हिसाब सही बैठेगा नहीं बैठेगा, मुझे रूम लेना पड़ेगा या मैं अपना अपार्टमेंट ले सकता हूँ, गाड़ी का क्या होगा. ये सवाल नहीं पूछने चाहिए आपको. तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2-3 साल का, ताकि आप एक रीजनेबली गुड पोजीशन पे एज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल पहुंचो, ताकि कंपनी जब आपको बुलाए तो वो समझे कि बंदा बुलाया भाई हमने, वो चीज़ें अरेंजमेंट आपका करे, आपके पास भी पैसे खुले हों, आप मूव कर सको. दैट इज़ द आइडिया. सो थोड़ी मतलब होड़ नहीं मचानी चाहिए कि जल्दी करो. पंजाबी में कहते हैं ना, होड़ होती है, जल्दी नहीं मचानी चाहिए. यू शुड गेट सम एक्सपीरियंस, देन अप्लाई, एंड यू विल गेट बेटर पोजीशंस बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. दैट्स द पॉइंट. इफ यू आर एक्सपीरियंस, देन गो हेड. आफ्टर यू क्वालिफाई सीएमए, डायरेक्ट अप्लाई. फिर तो हो गए ना इंडिया में ऑलरेडी 4-5 साल आपको काम करते हुए, देन यू आर एक्सपीरियंस्ड.
फिर अप्लाई करो डायरेक्ट, वो अलग बात है। पर जो फ्रेशर है वो एक्सपीरियंस गेन करे। तो इफ वी आर सेइंग कि हमें एक्सपीरियंस इंडिया में लेना है, तो बेसिकली विच कंपनीज हायर सीएमए इन इंडिया, बिकॉज हम यहीं से तो एक्सपीरियंस लेके That's जा रहे also हैं a ना। good question. Very relevant question, in fact. Who are the companies that hire CMAs in India? Well, the truth of this is, any company that's listed on the New York Stock Exchange is going to require their accounting to go through a certain process, and it is going to be based in a way, or it's going to be reported in a method, in a method ही बोलूँगा, called US GAAP. US generally accepted accounting principles. तो US GAAP is a way of doing accounting, right? जैसे इंडिया में INDAS चलता, तो जितनी भी NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं, एंड अगेन माइंड यू, NYSE इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, उससे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है नहीं पूरी दुनिया में, राइट? तो जो कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि वो अपनी अपनी कंट्री में तो लिस्टेड हैं ही, उससे भी ऊपर उड़ गई हैं साइज में, बड़ी हो गई हैं, टाटा मोटर्स जैसी, HDFC बैंक जैसी, ये तो इंडियन ब्रांड्स हैं, बट ये इतने बड़े हो चुके हैं कि दे आर लिस्टेड ऑन NYSE. ओके, तो ये जब एक बार NYSE पे कंपनी लिस्ट हो जाती है ना, तो फिर देन दे डोंट हैव अ चॉइस, देन दे नीड अ CMA बिकॉज दे गोइंग टू फॉलो US GAAP अकाउंटिंग. ओके, That's the point. तो virtually every big brand that you can think of that you want to own or attain today is actually a global brand. जिस भी कंपनी की खाना आप पसंद करते हैं, फास्ट फूड की बात करें, बड़ी बड़ी चेन्स, सारी अमेरिकन चेन्स हैं, NYSE पे सारी लिस्टेड है मेजरली, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज वगैरह वगैरह ये सब. And if you're somebody who's interested in, let's say, cars, like I'm very interested in cars, so even the biggest car companies of the whole world, in fact almost all of the major car companies of the world are already listed on NYSE, which includes India's Tata Motors, right? And then companies like Ferrari are also listed on NYSE. So just naming a drop, name dropping हो रही है ये, I'm just naming a few companies, but just telling you basically ये सारी companies जो हैं इनको लोग चाहिए US GAAP वाले. अब क्या होता है, it's not easy always to have people employed within your company. For example, Microsoft जैसी कंपनी है, ठीक है, उसे अकाउंटिंग करनी है पे रोल की, और उसके जो एम्प्लॉयज हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो सबका ही रिकॉर्ड रखेगा. तो अराउंड द वर्ल्ड उसके लाखों एम्प्लॉयज हैं, लिटरली लाखों एम्प्लॉयज हैं. लाखों एम्प्लॉयज की सैलरी, इसका पे रोल का अकाउंटिंग करने के लिए पूरा डिवीजन खड़ा करना पड़ेगा. तो वो खुद तो नहीं करेगी, खुद कर सकती है पर उसमें कॉस्ट बड़ी लगेगी. इससे अच्छा क्यों ना एक ट्रेंड कंपनी जो आउटसोर्सिंग का काम करती है, जैसे जेनपैक्ट हो गई, एक्सेंचर हो गई, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए. तो इंडिया में आउटसोर्सिंग इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती आ रही है सन 2000 से, हम सब देख रहे हैं, और वो हमारी इकोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है. तो आउटसोर्सिंग इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, और ये US का ही काम होता है, UK का काम होता है, कनाडा का काम होता है, और ये मोस्टली अगेन द पॉइंट इज ये आउटसोर्स करते हैं. तो इंडिया में काम आता है, हम लोग करते हैं, हम कंप्लीट करके देते हैं. तो हैविंग क्वालिफिकेशंस दैट आर रेलेवेंट टू देयर प्रोसेस इज अ मैंडेटरी थिंग इफ यू वांट टू राइज इन गुड पोजीशंस इन दिस फील्ड. तो ये भी एक पॉइंट है. तो आउटसोर्सिंग कंपनीज भी इंडिया में भर भर के हायर करती हैं. फिर बिग फोर भी हैं यार, EY, KPMG, Deloitte, PwC, in certain departments they do hire CMAs, qualified CMAs. तो अगेन बेसिकली CMA है क्या? CMA एक मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की स्पेशलाइजेशन डिग्री है, एक डेजिग्नेशन है जो आप नाम के आगे लगाते हो. सो ऑब्वियसली जो लोग US अकाउंटिंग कर रहे हैं उन सबको इस स्पेशलाइजेशन की कीमत तो होगी, तो वो हायर तो करेंगे ही, ये वाली बात है. ग्रेट, thank you for giving a detailed understanding on the company sector and the job. I tried to be without doing too much name dropping. Okay, my last question for this particular podcast is, Rohan, what is the advantage, मतलब अगर मेरे को CMA करना है after BCom, what are the advantages of doing CMA, US CMA? Okay, I think that's very valid. In this case, I'll just give you a few points that we should consider as a student. Number one is, of course, your objective. Let's talk about that. Number two should be the cost that you associate with this program. Number three has to be the cost of time that you're going to invest in any program. Right. So first things first, if your objective is, if you're, again, who should do it is also a point. Either you're somebody who's just a graduate and you're reasonably a fresher, less than 5 years of experience. So you're sort of getting there. You're not a seasoned professional yet. 5+ years नहीं होगा इंडस्ट्री में. CMA is going to give you a nice good kick that you want in your career. It will give you that lift that you want without costing too much money. As a professional, I think 1.5 lakhs to 1,70,000 में सब कुछ
स्टडी मटेरियल एग्जाम वगैरह सब मिला के एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका काम हो जाता है. Right. So it's very little investment, but you get a 30, 40, 50% hike. Who knows? Depending on how you negotiate and who you are in your company, how much experience you have, you might be able to, change the game for you. And as a fresher, again, if you're, that's my whole point. If you've got less than 5 years of experience, so anyways, this is a wonderful thing because as a graduate, what is the entry level job you're going to get? Right? 3-4 lakhs. That too in DU, which is widely considered the best in India, right? Especially for commerce. तो कॉमर्स के ग्रेजुएट हो, MU से हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, पुणे यूनिवर्सिटी से हो, व्हाटएवर, चांसेस आर योर पे स्केल्स विल बी वेरी सिमिलर यार. 3 to 4 lakhs. आई एम नॉट सेइंग बहुत कम हो जाएगा, बट इसी के आसपास होगा. एज अ क्वालिफाइड CMA, you don't have to put in too much money. As a student, firstly, you get special discounting prices. So you get to spend less than 150, 134 के आसपास है मेरे ख्याल एज अ स्टूडेंट. तो इन्वेस्टमेंट भी कम है. प्लस इफ यू आर स्टूडेंट नहीं थे, अब हो गए, कॉलेज पार हो गया, but you're a graduate, but at the same time you're not somebody who's got a lot of experience. तो नौकरी करते करते मान लो जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं, ऐसा कैंडिडेट है, तो प्रोफेशनल में आओगे 170 की इन्वेस्टमेंट करोगे, बट देन योर पैकेज सडनली राइजेस टू अ मिनिमम ऑफ 6-7 lakhs. And if you've got experience, 2-3 years of experience, you can expect 8+, 9+. So it's going to give you that kick. इन्वेस्टमेंट जो बंदा इसमें कर रहा है मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको किक ज्यादा अच्छी मिलेगी, रिटर्न ज्यादा अच्छी मिलेगी. ऑल्सो टाइम इज एन एडवांटेज. That's another great thing. CMA में 2 ही एग्जाम है, राइट? सो इट्स ईजियर टू डू. 2 एग्जाम्स हैं जो आप 6, चलो खींचतान के 9 महीने मान लेते हैं यार, 3 महीने का मार्जिन दिया. 9 महीने में तो कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल पार्ट टाइम जो पढ़ रहा है सिर्फ, जो सिर्फ कुछ घंटे निकाल के पढ़ रहा है, 2-3 घंटे ही निकाल सकता है दिन में, वो भी 9 महीने में हर हालत में दोनों पार्ट क्लियर कर लेता. तो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम कम है ना, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपको आउटकम आ जाएगी. तो 2 कैटेगरी के लोग, एक तो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरे जो क्वालिफाइड प्लस एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी हैं. जैसे जब मैंने CMA करी थी, आई वाज ऑलरेडी ए CPA, आई ऑलरेडी हैड 5+ years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस. दैट वाज द पॉइंट कि यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर अ CPA, you are a CA, you are a ACCA, but so is the next guy working with you. Correct. How do you stand out? How do you gun for that next position? तो मेरे केस में I felt CMA is my calling. अकाउंटिंग, प्लानिंग, बिजनेस, ये सब वैसे भी पसंद है ना मेरे को, तो ठीक है, ये मेरी फील्ड बनी. तो दैट इज माई पॉइंट कि 2 तरीके के लोग हैं, इनको करनी चाहिए. दिस इज माई रिकमेंडेशन. नंबर 1, if you're a fresher or less than 5 years experience, you're looking for a quick course that gives you a quick pickup in your career, CMA. Okay. Or if you're qualified and experienced, you've got 13 years, 10 years or more than 5 years of experience essentially, so you're a seasoned professional to a certain extent, or you're getting there, and at the same time you are somebody who's already qualified, you've got a CA, ACCA, CPA or something like that, top up, or a CFA, and you're looking for a specialization or domain में कुछ और एक चीज और जो आपको आगे ले जाए, अलग कर दे, promotion instant मिल पाए आपको. CMA is a good choice, very good choice. So viewers, I believe you must have got a wider clarity why US CMA after graduation is worth doing for a student or for a working professional. If you want to know more about US CMA, you want one-on-one consultation, or you want to join an orientation with us, you can find the link in the description. You can click that link and you can join us, for the sessions. And meanwhile, you can, if you have any doubt, any questions regarding this podcast, you can put your comments in the section below. As always, like, share, comment, subscribe. We do read our comments. We do respond to all our comments as much as we can. Personally करने की कोशिश करते हैं हम तो. So please do reach out to us if there's any topic you feel we should talk about. Especially to CMA. Especially related to CMA or CPA or any other qualification of that nature. Please feel free to let us know about it in the comments. We'll read it. We'll make a podcast on it. Thank you so much for watching. Bye. Bye.